Today, Yes, sir. the topic of today is the equilibrium. Equilibrium is a point where demand and supply both intersect each other. Baba, simple definition of equilibrium is that कि जिते सप्लाई कर्व ऐं डिमांड कर्व पाण में कट कनि त उन प्राइस खे असां इक्विलिब्रियम चवंदा आहियूं. टेक एग्ज़ाम्पल ऑफ एप्पल. जेको डिमांड करण वारो आहे उहो चए थो त मूंखे एप्पल खपे 50 रुपए में. जेको सप्लाई वारो उहो चए थो त बाबा एप्पल जेको किलो आहे उहा 70 रुपए आहे. हाणे बोथ आर निगोशिएशन ईच अदर. बोथ आर सेइंग दैट the price of apple should be like a 55 rupees, like a 60 rupees. So जो डिमांड वारो हमेशा चाहींदो आहे त I need a particular commodity which have a lesser, which is have a low price. ऐं सप्लाई वारो छा कोशिशि कंदो आहे, सप्लाई वारो कोशिशि कंदो आहे त मूंखे उहा कम्युनिटी, उहा जेका कमोडिटी मिले उहा सुठे प्राइस में मिले ऐं सुठे प्राइस में मां उहा सेल कयां. हमेशा सप्लाई ऐं डिमांड, जेका डिमांड आहे उनजो प्राइस सां इनवर्स रिलेशनशिप आहे ऐं हुनजो प्राइस सां पॉज़िटिव रिलेशनशिप आहे सप्लाई जो. त जॾहिं बि प्राइस ऑफ एनी कम्युनिटी इंक्रीज़िस, सप्लाई इंक्रीज़िस. व्हेन द प्राइसिस ऑफ एनी कम्युनिटी डिक्रीज़िस, देन सप्लाई डिक्रीज़िस. लॉ ऑफ डिमांड छा थो चए? लॉ ऑफ डिमांड चए थो त व्हेन प्राइस इंक्रीज़िस डिमांड डिक्रीज़िस, व्हेन प्राइस डिक्रीज़िस डिमांड इंक्रीज़िस. हाणे जिते ॿ ई एग्री, बोथ हैव अ कंसेंसस एंड बोथ दे एग्री दैट दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ I can show you like in a graph, and you will see that how a demand and supply curve both can intersect. Very few examples are given by many of the authors, but I will not rely on that book. Look, this is a particular, ही ॾिसो. हाणे हिन में मां डिमांड कर्व कढी आहे. हिकु सिंप्लीफाई करण जे लाइ मां तव्हांखे एक्स एक्सिस ऐं हिते प्राइसिस एंड वाई एक्सिस ते तव्हांजी डिमांड रखी आहे. नाउ इफ यू जस्ट go through the book, it will be very complicated, but if you just go for the sham series, and now this is the demand and this is supply. Now this is point is called equilibrium. ॾिसो बाबा, ही ॾिसो सिंपल. सभिनी शयुनि खे छॾियो, ही ॾिसो, ही डिमांड मथां खां हेठि ऐं ही हेठां खां मथे सप्लाई. and this is the equilibrium point. This equilibrium point you must give a E. E denotes to the equilibrium. Now this is the price 4 rupees, where both demand and supply both are agreed that we have to just sell this in this price, where both demand, consumer and producer both are satisfied in a certain price, that is called a equilibrium price. Means equilibrium is the price where both consumer and producer both are agreed. This is called a equilibrium price. Now if you have any questions, you just give me from your side. If you have any